morning, guys. We have started from Satara and on the way to Mumbai. It's about 300 kilometers from here to Mumbai. Will take about 6 to 7 hours and we'll be going via Pune. सो फ्रेंड्स, हम लोग सतारा से निकल चुके हैं और मैं आपको बता दूं टोटल डिस्टेंस जो एक्चुअली गूगल दिखा रहा है दैट इज़ शोइंग अराउंड 250 किलोमीटर्स. सो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही होना चाहिए, 250 से 300 किलोमीटर टू मुंबई. हम लोग जा रहे हैं चेंबूर और इस वाले सेक्शन के लिए अगर आपको याद हो, मैं 3 सेक्शन ऑलरेडी बना चुका हूँ. ये 3rd सेक्शन है जो कि हमारी फर्स्ट डे था चेन्नई से बेंगलोर. देन हमने बेंगलोर में स्टे किया था, फिर बेंगलोर से सतारा, फिर हमने सतारा में स्टे किया था एंड सतारा के बाद अब हम लोग मुंबई जा रहे हैं आज. सो आज का जो जर्नी है वो होने वाला है 4 से 5 घंटे का एंड मैं फोकस करने वाला हूँ टू enjoy the highways, enjoy speaking very less on that because I don't want you guys to get bogged down in what I am talking. I just want you to enjoy the nature, enjoy the driving. तो आप इसको पूरी तरह से enjoy करें. आपको most of the section जो मिलेगा वो आपको सिर्फ कहीं कहीं पे मैं अपने कुछ जो मुझे अच्छा लगेगा वो चीज़ें बताऊंगा. अदरवाइज़ ओवरऑल आप म्यूज़िक के साथ इसको एंजॉय करें. जैसा मैंने बताया अराउंड 4 to 5 आवर्स की जर्नी हमारी होने वाली है एंड हम लोग जा रहे हैं अपनी BMW में. हम चारों साथ में ही हैं. यहाँ से अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू चेन्नई टू बैंगलोर और बैंगलोर टू सतारा से मुंबई में कुछ खास डेस्टिनेशंस नहीं आएंगे. आई मीन स्टॉपेजेस नहीं आएंगे. यहाँ से मोस्टली हम जो फर्स्ट मेजर डेस्टिनेशन वो सीधा ही पुणे आएगा. पुणे हम लोग बाईपास लेंगे और उसके आगे विल बी क्रॉसिंग लोनावाला एंड लोनावाला के बाद में हम कल्याण साइड से क्रॉस करके एंड देन उसके बाद मुंबई में नवी मुंबई में एंट्री करेंगे और वहाँ से जाएंगे चेंबूर. Say it louder. Oh, you're the question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this on. So we just reached Pune and we are actually crossing Pune. So we'll be just going outskirts of Pune. Should be another 2.5 to 3 hours actually, 3.5 hours to Mumbai from here onwards. So we have just entered the expressway now, Mumbai-Pune expressway. And it's about 131 kilometers on this expressway we'll have. It's a beautiful expressway and only thing is everybody needs to drive safely on this expressway because it's a real super stretch highway and lot of traffic, but still you get ease with the traffic in terms of the congestion because you hardly see any.
just reaching Panvel exit now. So it's about now just about half an hour drive from here to Mumbai, and we enjoyed this whole trip. And it's just about to get over another half an hour. We'll be touching Panvel, and then we straight away go to the destination of ours. And right into the city. So thank you so much for this vlog, and I hope you will enjoy the clippings what I have put in this video. They are really good, especially just to summarize once again, when we started from Chennai. So we took almost we actually took 2 stoppages, one at Bangalore and then in Satara. And today we are covering almost 225 kilometers to Mumbai. Lovely journey. Roads were very good. I would say overall, if I rate this trip in terms of infrastructure offered for the roads, it's 6 out of 10, because we had bad stretches in Dharwad and Vellore while coming from Chennai, and also the bumpy roads after Satara till Pune. Otherwise, very good experience, and I would recommend you also can take this trip or such trips cross India from east to west, north to south. It's really good to travel in your own car, because you can stop over wherever you would like to do that, and you can enjoy the trip. So take care. Bye bye. To something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down.